हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2015 का जो सीसेट का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आया 109 तक हमने देख लिया था। अब यहाँ से 2015 का स्टार्ट होगा। द रिच स्टेट हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके रिचर स्टेट हैं, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, उनपे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कट डाउन द कार्बन एमिशन, कि अपने कार्बन एमिशन को कम कीजिए एंड प्रमोट कीजिए क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देयर आर स्टेट दैट गोट इलेक्ट्रिसिटी ग्रीव फ्यूअर एंड है आउट पर कैपिटा इनकम भी है, मेकिंग दम कैपेबल। उनको बनाता है कि आप इंडिया की जो बर्डन शेयरिंग में थोड़ा बहुत इको फ्रेंडली एंड कैपेबल हो, आप इस बर्डन को थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो। ठीक है। इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर दिल्ली कैन हेल्प बाय जनरेटिंग इट्स ओन क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट कर सकती है यूजिंग सोलर रूफटॉप पैनल एंड कैन हेल्प पुअर स्टेट फाइनेंस देयर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। एंड इट इज नो सीक्रेट दैट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच कंट्रोल, जो कि 95% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है, आर नेक डीप लॉजेस। नुकसान में भी है। दे लॉज फर्दर डिस्करेज स्टेट यूटिलाइजिंग देयर फ्रॉम अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल। बस सिर्फ एक आपसे पूछा गया, जंक्शन आप बना सकते हो फॉर अबू पैसेज। दिस स्टेट मस्ट लीड इन द प्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। इस टाइप की स्टेटमेंट को चुनने से पहले एक बार सारी स्टेटमेंट पढ़ लो। द पुअर स्टेट ऑलवेज हैव डिपेंडेंट ऑन रिच स्टेट, ऑलवेज। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैन इंप्रूव देयर फाइनेंस बाय अंडरटेकिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हमें लग रहा है। द हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट इज मेजर कॉज ऑफ हाई कार्बन एमिशन का, ये कारण है। एंड द आंसर टेकिंग बाय यूपीएससी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट assumption inherent in the first part that rich state having grown and capability as share India's broaden, बाकी आई डोंट थिंक डायरेक्टली ये आप बोल सकते हैं। ठीक है। एंड इसको भी हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नहीं बता रखा, तो ए इसको मान के चलो अभी के हिसाब से। नेक्स्ट पैसेज, सेट अगेंस्ट ए रूरल बैकड्रॉप, स्ट्रेंथ ऑफ कैरोसिन इज ए स्टोरी ऑफ कपल, जो कि गुलेरी एंड मानक के बारे में बता रही है। who have happily married थे for several years but do not have a child, उनका बच्चा नहीं था। मनक मदर इज disseparate to have grandchild to carry with the family name। ठीक है। hence he get मनक remarried, गुलेरी जब सेंड में दोबारा शादी कर दी। मनक who act as a reluctant but passive spectator, it meanwhile informed by a friend that Guleri, on hearing about her husband's second marriage, poured kerosene on her clerk and set a fire to them। ठीक है। मानक इज हार्ट ब्रोकिंग एंड बिगिन टू लिव एज डेड मैन। ठीक है। व्हेन हिज सेकंड वाइफ डिलीवर सेशन, मानक स्टेयर्स एट द चाइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ब्लर्ट्स आउट, टेक हिम अवे एंड ही स्टिंग्स ऑफ kerosene। दिस इज अ सेंसिटिव इश्यू बेस्ड ऑन स्टोरी, ट्राइज टू सेंसिटाइज द रीडर अबाउट। किसके बारे में बात कर रहा है? मेल क्योनिज्म के बारे में, लव और पेट्रियार्कल, लैक ऑफ लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन, इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज पेट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ पे। ठीक है। टेक नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज, अल्टीमेटली एम ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट, ये नहीं है टू रूल और कंट्रोल बाय फियर, डरा के लोगों को रूल किया जाए, है ना। एंड नॉट टू डिमांड ओबीडियंस, कि आप हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, उसकी डिमांड हम नहीं कर सकते। बट कन्वर्सली टू फ्री एवरी मैन फ्रॉम फियर, उनको डर से मुक्त किया जाए। ही मे लिव इन ऑल पॉसिबल सिक्योरिटी वो जिसकी, इन अदर वर्ड्स टू स्ट्रेंथन हिज नेचुरल राइट टू एग्जिस्ट एंड वर्क विदाउट इंजरी, दूसरों को इंजरी किए बिना ही काम करें। The object of government is not to change minds from rational being into beasts or puppets. It should enable them to develop their minds and bodies in security and to employ their reason and second. Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? कौन सा यहाँ पे हम देख सकते हैं? That true aim of government is to secure the citizen from social and political freedom. No, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली तो डिस्कस नहीं कर रखा, बाकी देखते हैं। Primary concern of government is to provide absolute social security, absolute. Best government is to one that allow the citizen to enjoy absolute तो ये जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से ट्रू एम हमें इसी को लेना पड़ेगा। एंड आंसर ए इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन की हमने बात की। नेक्स्ट पैसेज थोड़ा सा कट आउट हो गया, हम आगे भी ऐसा ही कुछ है। We have to cooperate from this
मैं एक बार यहाँ पे आपको साइड में बोल के बता दूंगा क्या कुछ लिख रखा है इसमें। पेसेज नंबर कौन सा है? और 1112 के आसपास तो रिकॉर्डिंग कानून में 112 अल्टीमेट एम ऑफ गवर्नमेंट। ओके ओके, ये तो हमने देख लिया है। बराबर था। अगला देखेंगे। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर अंडर स्टाफ, स्टाफ उनके अंदर नहीं है, द इश्यू ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टाफ पोजेस एन इवन ग्रेटर चैलेंज है इसके ऊपर, ठीक है। अर्बन सर्विसेज डिलीवरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्स टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दे रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, एंड प्रोफेशनलिज्म क्या हो सकता है। द करंट फ्रेमवर्क विद इन म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट आर रिक्रूटेड does not adequately factor in the technical and managerial competencies required. Cadre and recruitment rules only specifies minimum academic qualification की बात करते हैं, नो मेंशन ऑफ मैनेजरियल और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी की बात नहीं की गई, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की। दिस इज द दिस इज द केस विद मोस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ यही है। दे ऑल्सो सफर फ्रॉम वीक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, तो कहीं ना कहीं हमने रिक्रूटमेंट अच्छे से नहीं किया, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है रिक्रूटमेंट का इस पे बात की है। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल assumptions कौन सी बना सकते हैं फ्रॉम द लॉ बेसिस। टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इज ए कॉम्प्लेक्स इश्यू है विच रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन एंड म्युनिसिपल बॉडीज ऑल ओवर द कंट्री। देखते हैं। आवर सिटीज कैन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ आवर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैव एडिक्वेट स्टाफ। देखते हैं। कॉम्पिटेंसी इट कैन बी एज पर द पैसेज। लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ इज ड्यू टू absence ऑफ इंस्टीट्यूशन रिक्विजिट, क्या इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। देखते हैं। Our country is not taking advantage of the demographic dividend, ऐसा कुछ तो डिस्कशन। एंड ये सारे ऑप्शन पढ़ने इसलिए जरूरी है, कई बार हम जल्दबाजी में सोचते हैं शुरुआत में मिल गया। प्लीज सारे ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो। एंड इसका जो राइट आंसर है एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन और लोकल गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, एडिक्वेट स्टाफ हो, तो बी। तो तेरा का नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो इन लार्ज फ्लोक इन द वाइल्ड आर सोशल एक्सट्रीमली लॉयल है। दे परफॉर्म ग्रुप मैटिंग डांस करते हैं। पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड है ऑफ देयर चिक्स, गैदरिंग इनटू द क्रैच फॉर प्रोटेक्शन इन while both male and female fly off to search for food, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, कोरोलरी ये सारी मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन में कर देता हूँ थोड़ा सा। कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, अगर आपसे ये पूछा कि इन्फ्रेंस क्या बनेगा, कोरोलरी क्या है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे ये पूछा कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन देना है, तो आपको कोई भी आउटसाइड नॉलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट आपको पैसेज से निकालना है कंक्लूजन क्या है टाइम में। इन्फ्रेंस में आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो भी यहाँ पे फैक्ट एविडेंस दिए गए हैं, जो भी ओपिनियन है जजमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। आंसर आपको सिर्फ पैसेज के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉमन सेंस है उसको चेक किया जा रहा है। एजम्पशन की बात करें, एजम्पशन में क्या करना है, यहाँ पे जैसे कोरोलरी बता दी, उससे पहले एजम्पशन था, तो जो राइटर ने लिखा है उसको सही मानना है, हाँ भाई ये सही है, खुद का दिमाग फ्यूज ज्यादा नहीं करना, ठीक है। इम्प्लाई, जो कि सजेशन यहाँ पे मिल सकता है, व्हाट कैन बी इम्प्लाई, क्या हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपका हिडन है पैसेज के अंदर बट डायरेक्ट नहीं है। रस क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, ये इसका मेन पॉइंट है। देन इम्प्लीकेशन, कोज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, एंड रिलेटेड टू द आंसर। एंड लास्ट वन इज कोरोलरी क्या है, अब सिचुएशन के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट है एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड चीजों को देखते हुए आप ऑप्शन और फैक्ट को जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, यहीं पे जो ऑप्शन है उसको हिसाब से हमें देखना है। मास नेस्टिंग इन ऑल स्पीसीज ऑफ बर्ड इज एसेंशियल टू एंश्योर कंप्लीट सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। लेट अस सी, ओनली बर्ड्स हैव द कैपेसिटी टू डेवलप सोशल बिहेवियर। देखो यूपीएससी की जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उस पर प्लीज एक बार स्ट्रेस दिया करो। एंड दस कैन डू मास नेस्टिंग, ठीक है। सोशल बिहेवियर इन सम स्पीसीज ऑफ बर्ड इंक्रीज द odds ऑफ सर्वाइवल इन अनसेफ वर्ल्ड। All species of birds scratching their cheek to teach them social behavior and loyalty. ठीक है।
सोशल बिहेवियर इन स्पीसीज इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पे सी लिया गया है और प्लानिंग, ठीक है, कुछ ज्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे भी नहीं दे रखी। नेक्स्ट इज वास्ट नंबर ऑफ अर्बन इंडियन सिटीजन विदाउट बैंक अकाउंट लिव इन रूरल एरिया में रह रहे हैं, फाइनेंशियली एंड फंक्शनली इलिटरेट है एंड हैव लिटिल एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी का। ठीक है भाई, रिसर्च स्टडी ने ये बताया था कि पर्टिकुलर एरिया इन विच इलेक्ट्रॉनिक वेज पेमेंट जो है जैसे मनरेगा है आर मीन टू गो डायरेक्टली टू द पुअर। इसका डायरेक्ट मतलब लोगों को जो पुअर है उनके साथ मतलब इसका काइंड ऑफ उससे अटैचमेंट है। इट वाज ऑब्जर्व दैट रिसिपिएंट ऑफन एज्यूम दैट विलेज लीडर नीड टू मीडिएट द प्रोसेस। वो ये सोचते हैं कि जो विलेज का हेड है काइंड ऑफ वो यहाँ पे मीडिएट है, वही हमको पैसे देगा। एंड was the case under the previous paper based system, पहले जो था वैसा ही है। Among household under this research study who claimed to have at least one bank account and over a third reported still receiving Manrega wage cash directly from village leader. Okay. What is the most logical and regional जो rational crux crucial message क्या है? ठीक है, तो कि इसके अंदर implied है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, मनरेगा शुड बी एक्सटेंड ओनली टू दोज हु हैव ए बैंक अकाउंट, तो ओनली टू दोज। द पेपर बेस्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट इज मोर सफिशिएंट, मोर एफिशिएंट है पेपर बेस्ड देन इलेक्ट्रॉनिक। ये हम कैसे बोल सकते हैं यार? द गोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पेमेंट वाज नॉट टू एलिमिनेट मीडिएशन बाय विलेज लीडर। इसका मतलब मीडिएशन को बाहर करना, दूर करना नहीं है। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी टू द रूरल पीपल। तो कहीं ना कहीं हमने डायरेक्ट इसके ऊपर बात की फाइनेंशियल लिटरेसी को, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पैसेज इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड लीडर हु प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट को जो प्रमोट करते हैं ऑपरेट अंडर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट दैट इफेक्ट पॉलिसी ऑप्शंस। ठीक है, बट एक्सपीरियंस सजेस्ट broad principle for shaping an appropriate agenda for human development. One important finding from the several decades of human development experience is that focusing exclusively किसके ऊपर economic growth is problematic. While we have a good knowledge about how to advance health and education, the cause of growth are much less certain है and growth is often elusive है। Further, an unbalanced emphasis किसके ऊपर है? growth is often associated है negative environmental consequences के साथ है, adversarial distributional effect है, जैसे experience of China with an impressive growth था with record reflect these broader concern and underline the importance of balanced approach that emphasize investment in the non-income aspect of human development. So the following consider the following statement. ठीक है, in developing countries, strong institutional framework is only recruitment for human development and policy. Human development and economic growth are not always positive interrelated. ये हो सकता है, देखो not always दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी मैं ये बोला कि आंसर फोकसिंग ओनली ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया सी, ठीक है, टू ओनली बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रेटेड नहीं होते, ठीक है, ये हमने ऊपर बात भी की। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग assumption have been made. हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल है टू इंश्योर रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन इज सम टाइम ए कॉन्सिक्वेंस है एनवायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो सकता है, यस। एंड यहाँ पे आंसर लिखा है बी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल नहीं है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पैसेज ह्यूमन हिस्ट्री, देखो पहले इतनी छोटी पैसेज आ रही थी, क्वेश्चन भी एक ही था। ह्यूमन हिस्ट्री अबाउंड इन क्लेम्स एंड थ्योरीज confining the right of government to a few select citizens. Exclusion of many is justified on the ground that human beings will rightly segregate for good society, good of society and viability of a political process. Which of the following statement is least essential as a part of argument of the book passage? Man seeks control over external things affecting him. In society there are super and subhuman beings. चलो, exception to universal citizen participation are conducive to systemic efficiency and governing implies recognition of disparity in individual capacity.
The answer is men seeks control over Neval. And answer का reason है not or least essential to a part of argument because irrelevant in the context of SEG. लिए आपका essential super और सभी human refer to few select citizen. ये वाला है. And C is essential part of second sentence clearly say this. Okay. That is exemption universal participation conducive to appreciation. Governing implies. ठीक है. Now come to next. By 2050 2050 की बात कर रहा है कि 2050 तक अर्थ की जो पॉपुलेशन है विल लाइकली हैव स्वेल्ड फ्रॉम 7 टू 9 बिलियन हो जाएगी. ठीक है. तो फुल ऑल दीज स्टमक सभी का पेट भरने के लिए व्हाइल अकाउंटिंग फॉर शिफ्टिंग कंजप्शन पैटर्न क्लाइमेट चेंज एंड ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड एंड पोर्टेबल वाटर. सम एक्सपर्ट्स से फूड प्रोडक्शन विल हैव टू बी डबल. तो डबल होना चाहिए फूड फूड जो हमारे पास अभी है उसका. हाउ कैन वी मेक द नंबर एड अप. कैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे. एक्सपर्ट सेज द हायर यील्डिंग क्रॉप वेराइटी आर मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड है. ठीक है. विल बी क्रूशियल. सो विल बी वेस्ट रिडक्शन. एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि cities to reclaim nutrient and water from the waste stream. ठीक है. जो वेस्ट स्ट्रीम उससे आप न्यूट्रिएंट को यूज कीजिए अच्छे से एंड प्रिजर्व फार्मलैंड. पुअर कंट्रीज दे से कैन improve the crop storage and packaging and rich nations would cut back on resources intensive food like meat. Which of the following statement is best sum up of the passage? Population of world is growing very fast. Food security is perennial problem only in developing country. Only the world does not have enough resources to meet the impending food scarcity. Resources नहीं है. Food security is increasing collective challenge है. बेस्ट समझ तो हम यही बोल सकते हैं कि सबका ये चैलेंज है. तो ऑप्शन डी. Many people in India feel that if we cut, अगर हम कट करते हैं हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर on weapon building, we can create a climate of peace. हम बना सकते हैं with our neighbors. Subsequently reduce कर सकते हैं conflict को और create कर सकते हैं no war situation को. People who proclaim such ideas are either the victim of war हो चुके हैं या फिर propagator of false argument हो सकते हैं. With reference to the above passage, which one of the following is most valid assumption क्या है. तो war peace इसकी हमने बात की बस. Building a weapon system as an instigated our neighbors to wage a war against us. जब वो इससे बनाने से वो लड़ सकते हैं. देखते हैं. Greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict. देखते हैं. It necessary to have state that armed weapon system for national security. Many people in India believe that we are wasting our resources on weapon building. Many people in India feel that our ये सब है. तो option D is more appropriate है. बट यहाँ पे लिया गया greater spending on weapon by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbor. The answer given by UPSC, that is, it can also be inferred from the passage that India want to establish peace with our neighbors. But ठीक है. Weapon building will lessen the profit. ठीक है. ये भी मान के चलो. बट यहाँ पे वेस्टिंग का कर दिया. वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. एंड यहाँ पे क्या था. वी कट डाउन. ओके कोई नहीं. इंडिया अकाउंट फॉर नियरली a fifth of the world child death. 1/4 मतलब 20% के आसपास यहाँ पे चाइल्ड डेथ हो रही है. इन टर्म्स ऑफ नंबर हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर. नियरली 16 लाख एवरी ईयर. 16 लाख बच्चे जानकारी है. ऑफ दिस मोर देन हाफ डाई फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. मतलब अपने जीवन के पहले महीने में उनकी डेथ हो रही है. ऑफिशियल बिलीव दैट रीजन फॉर दिस इज एब्सेंस किसका है. स्टेप टू प्रोपोगेट बेसिक हेल्थ प्रैक्टिस हमारे पास नहीं है. रिलेटेड टू व्हाट. ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हमारे पास पॉलिसी नहीं मतलब प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है. ऑल्सो द लार्ज प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ 2.6 करोड़ रिमेन ब्रीफेट ऑफ केयर ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी में उनकी केयर नहीं हुई. एडेड टू दिस प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज भी है. एनीमिया भी है. यंग वुमेन एंड लैक ऑफ फोकस ऑन एडोलिसेंस सैनिटेशन भी नहीं है. टू इम्पैक्ट द चाइल्ड डेथ रेट. इससे भी हो रहा है. लेट अस सी व्हाट इज द क्रिटिकल इन्फरेंस. क्या है इससे. A lot of Indian are illiterate हैं. They do not recognize. I don't think. India has a very huge population है and government alone cannot manage public health services. ऐसा नहीं. हमने बात की है कि what we are not doing that is practice नहीं करे अच्छे से उसमें.
Universalization and integration of maternal health and child health services can effectively address the problem. Yes, इन दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे कि इम्यूनाइजेशन भी करें ये सभी ठीक है एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी ऐसा तो यार हम नहीं बोल सकते डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट इट कैन अफेक्ट अगर हमारे पास सैनिटेशन की अच्छी सी फैसिलिटी नहीं है तो नेक्स्ट पैसेज फूड ट्रेवल मोर देन द पीपल हु ईट देम मतलब फूड आपको ट्रेवल करता है जितना लोग खाते नहीं उससे ज्यादा ठीक है ग्रोसरी स्टोर एंड सुपरमार्केट आर लोडेड विद प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड फूड से भरे हुए हैं दिस हाउएवर ऑफन लेड टू इन्वायरमेंटल थ्रेट है कैसे है सच एज पोल्यूशन जनरेट हो रहा है बाय लॉन्ग डिस्टेंस फूड ट्रांसपोर्टेशन से वेस्टेज हो रहा है फूड का ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है रेन फॉरेस्ट का रिड्यूस करा न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज हो रही डिमांड फॉर प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग की फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है एज टू रिड्यूस कम्स फ्रॉम रीजन हु आर नॉट फीडिंग देयर ओन पॉपुलेशन प्रॉपरली फूड इनसिक्योरिटी वहां पे हो रही है ठीक है with reference to the following passage कौन सा ट्री है consuming regionally grown food and not depending on long distance is a eco-friendly behavior yes it can be but exactly we cannot say कि यही होगा next food processing industry puts burden on our natural resource क्या ऐसा हो रहा है यस यूपीएससी ने दोनों आंसर लिए हैं ये दोनों ही इसके कारण कंजप्शन अगर हम करते हैं उसी जगह का तो वो इतना बर्डन नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन की नहीं रहेगा एंड इंडस्ट्री एज बर्डन हमारे पास ठीक है 122 का सी अब थोड़ा सा बड़ा मैसेज आया है क्या पूछा ऑथर सेज फॉरवर्ड वर्ल्ड हार्डी यूर एस्केप हिज टंग और पैन ठीक आई मस्ट से मैं कहना चाहूंगा बियॉन्ड ओकेजनली एक्सपोजिंग मी टू लाफ्टर माय कॉन्स्टिट्यूशनल साइनस हैज बीन नो डिसएडवांटेज व्हाटएवर ठीक है in fact I can see that on the contrary it has all been my disadvantage so it has been all to my disadvantage all to my advantage okay sorry my hesitancy in speech which was once an annoyance था is now a pleasure है ठीक है it greatest benefit has been seen that it has taught me the economy of words इसने मेरे को सिखाया I have naturally formed the habit of restraining my thoughts ही मैंने सीखा है and and I can now give myself the certificate that a thoughtless word hardly ever escape my tongue or pen कि मेरे से बचा हुआ होगा ठीक है मतलब कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो लिखा है वो पढ़ा उसने I do not recollect ever having had to regret anything in my speech or writing. I have thus been spared many a mishap and waste of time. Experiencing has taught that silence is a part of spiritual discipline का part है वोट्रेरी of the truth proneness to exaggerate to suppress or modify the truth wittingly or unwittingly is a natural weakness of man and silence is necessary है in order to surmount it. A man of few words will rarely to be thoughtless in his speech. He will measure every word. We find so many people impatient to talk, and there is no chairman of a meeting who not trusted with notes for permission to speak. So complicated हो रहा है. And whenever the permission is given, the speaker generally exceed the time limit, ask for more time, and keep on talking without permission. All this talking can hardly be said to have any benefit to the world, and it has so much waste of time. My sinus has been reality my shield and buckler. It also given me to grow. It has helped in my discernment of truth. ऑथर क्या बताना चाह रहा है who worldly ever escape his tongue or pen which of the following is not a valid reason not पूछा है कौन सा valid reason है he has no intention to waste his time he believe in the economy of words he believe in restraining his thoughts he has hesitancy in no intention believes in economy of words he has no intention of the first six sentence of the passage clearly answer that okay. No intention to waste his time but mentioned in this constitutional sinus takes a lot of time take a time लगा the most appropriate reason for author to spared many mishap is that he hardly utters or writes a thoughtless word he is a man of immense patience spiritual person है what area of truth है so he hardly utters a right or thought of words the first half of the 7 to 8 line 7 to 8 sentence आप देख सकते हैं यहाँ पे
और इसके my tongue I do ठीक है. For the author, silence is necessary in order to surmount what? Passion of thought or tendency to overstate. D. 25 का D. Passage. India had suffer करे India from persistent high inflation से, increase in administered prices, demand and supply imbalance, imported inflation aggravated by a rupee depreciation, and speculation have been combined to keep high inflation going. If there is an element common to all of them, it has is that many of them are outcomes हैं economic reform के. Individually, जो इंडिया का vulnerability है to the effect of change in international price has increased with the trade liberalization and effort to reduce subsidy has resulted in a continuous increase in the price of commodity that administered. What is the most logical and rational crucial message कौन सा है? Under the present circumstance, India would completely avoid all trade liberalization. Due to peculiar socio-economic situation, India is not yet ready to trade liberalization. ठीक है. There is no solution in sight of the problem of continuing poverty. Economic reform often can create high inflation. ठीक है, तो ये आपका रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सी स्टेटमेंट है एंड यहाँ पे मेंशन भी है. High inflation in India, inability to contain its vulnerable external factors. Next one is no right is absolute. कोई भी exclusive नहीं है, कोई भी inviolable नहीं है. The right of personal property similarly has to be pursued to a large context of its assumed legitimacy. The right of personal property should unite the principle of liberty with that equality, both with the principle of cooperation के साथ होनी चाहिए. In the light of argument, above passage, which of the following statement is more conveniencing explanation once here? Right of personal liberty is a natural right है. Duly scored the statue of scripture. Correct. Personal liberty is a theft to an instrument exploitation. Right of personal liberty, therefore violation of economic justice. The right of liberty, so the personal property is violative of distributive justice है and negates the principle of cooperation. Comprehensive idea of economic justice demand that the right of each person acquisition of property consist with the each other. ये आपका right answer है because it is clearly explained in the argument by mentioning the right of each person to acquiring of property that has to be reconciled with the that of others and refer to the principle of cooperation. And 28. The conflict between man and state is an old state history. Although attempts have been made for centuries to bring about a proper adjustment की हमने बात की है between the competing claims of state and the individual. The solution seems to be still far off, and this is primarily because the dynamic nature of human society where old values and ideas constantly fill place of new ones. It is obvious that if individuals are allowed to have absolute freedom of speech and action, the result will be chaos, ruin and anarchy. The author blueprint best sum up कौन सी statement कर रही है? Conflict between the claims of state and individual remains unresolved. Yes, it can be. Anarchy of chaos और obvious result है democratic tradition. Democratic का हम कैसे बोल सकते हैं? और old values, ideas, tradition despite the dynamic nature of human society. Constitution guarantee करता freedom of choice, not interest. ऑप्शन ए ही ठीक है यार, क्योंकि इन सब का जो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यू है विद मेजर इम्प्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं. ऑल एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इज अल्टीमेटली क्या लेके आता है? कॉस्ट होगी भाई, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. फंडिंग इज वाइटल है फॉर व्हाट? कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान. अगर आप कर रहे हो तो लैक ऑफ फंडिंग इज लार्ज इम्पेडिमेंट है to implementing adaptation plans. The scale and magnitude of the financial support is required है by developing countries to enhance their domestic mitigation and adaptation actions are matter of intense debate in the multilateral negotiation under UNFCCC. The conventions clearly puts the responsibility for provision कर रही है financial support का on developed countries taking into the account for contribution to the stock of greenhouse gas. Given the magnitude of the task and the fund required, domestic finance are likely to fall short of the current and projected need of developing countries की.
Global funding through the multilateral mechanism of the convention will enhance their domestic capacity to finance their mitigation effort. According to the passage, which of the following are matter of intense debate है multilateral negotiation के कौन से scale and size of required financial support ठीक है the crop loss due to developing countries के अंदर to enhance the mitigation and adaptation action of the developing countries. The right answer is option का C 1 and 3 both क्योंकि यहाँ पे crop loss का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया. In the convention, in the passage, convention puts the responsibility and financial support to developed country because their higher level of per capita income, large quantum of GDP, and their large contribution stock to greenhouse gas. Yes, option C is more appropriate. यहाँ पे option C right. जबकि बारे GDP का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया. With regard to the developing countries, it can be inferred from the passage that climate change is likely to have implication किसके ऊपर हो सकते हैं? Domestic finance पे, capacity of multi trade. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक फाइनेंस को ही लिया गया बिकॉज सेकंड सेंटेंस गिवन द मैग्नीट्यूड टास्क ऑफ इट ठीक है जो द फॉलोइंग इज एसेंशियली डिस्कस कौन सा है conflict between developed and developing countries regarding support of for mitigation, occurrence of climate change due to excessive exploitation, lack of political will, governance problem for developing countries result of climate change. Most probability is conflict है developed and developing के बीच में. Next, climate change is already making many people hungry. लोगों को भूखा मार दिया kind of all over the world. By disrupting crop yield डिस्टर्ब हुई है, pushing up prices. crop अगर yield कम हुई तो प्राइस बढ़ गए. And it is not just food but nutrients भी आपके स्केयर हो गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ठीक है. poorest communities that will suffer जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं the worst effect of climate change सबसे ज्यादा वही आपकी इंक्लूडिंग इंक्रीज हंगर हो चुका है वहां पे माल बढ़ चुका है क्रॉप प्रोडक्शन वो सब भी आपके थ्रेटन में. ऑन द अदर हैंड पोवर्टी जो ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का मतलब पोवर्टी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये आप देखो. एज डिसेपरेट कम्युनिटीज रिजोर्ट टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज का करें टू मीट करंट नीड ये देखते हैं. मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी बताना प्रेजेंट नीड के हिसाब से गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंक्रीज फूड सब्सिडीज करे पुअर कम्युनिटीज में क्या ऐसा हो सकता है. पॉवर्टी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट रेनफोर्स ईच अदर एंड द रीएमिनेशंस ऑन आवर फूड सिस्टम में ऑल कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट ऑल कंट्रीज फाइटिंग करना चाहिए इन सभी. We must stop unsustainable agriculture immediately and control food prices. क्या हम फूड प्राइसेस को भी रोक सकते हैं. The most one is poverty and climate impact एक दूसरे को वो कर रहे हैं. जैसे अगर poverty है तो उससे क्या हो सकता है climate change ये हमने डिस्कस किया. And global financial stability report इसने बताया है कि share of portfolio investment from advanced economy in the total debt and equity investment in emerging economy में डबल हो चुकी है इन पास्ट डिकेड कितना to 12%. The phenomena has implication है for Indian policy makers के लिए भी as foreign portfolio investment in the debt and equity market have been rise. Phenomena is also flagged as a threat to that could compromise कर सकता है global financial stability के साथ in a chain of reaction. In the event of United States Federal Reserve में eminent रिवर्स आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी में ऐसा उसका रिवर्सल. Which of the following most race में critical inference कौन सा है. Foreign portfolio is not good for emerging economy. Advanced economy undermine कर रहे हैं. India should desist from accepting portfolio investment. Emerging economy are at risk of absorption from advanced economy. 140, 134 का D. Emerging economy are at risk. Next is most critical inference कौन सा है. Open defecation is a disastrous when practiced in very densely populated area में अगर ऐसा हो रहा है where it is impossible है to keep away human feces from the crop where food and children's hand groundwater is also contaminated of open defecation से many ingested germs and worms आएंगे spread करेंगे disease को. they prevent the body from absorbing calories भी नहीं आएंगी nutrients भी नहीं आएंगे. nearly 1/2 of Indian children remain malnourished. लाख्स ऑफ देम डाई हो रहे हैं फ्रॉम प्रिवेंटेबल कंडीशन से. डायरिया लीव्स इंडियन बॉडीज स्मॉलर ऑन एवरेज दैट ऑफ पीपल इन सम पुअर कंट्रीज वेयर पीपल ईट फ्यूअर कैलोरीज. अंडरवेट मदर प्रोड्यूस स्टंटेड बेबीज प्रोन टू सिकनेस और में फाल फेल टू डेवलप देयर फुल कॉग्निटिव पोटेंशियल में नहीं है. द जम्स रिलीज इनटू द
environmental may harm rich and poor alike. Use that. Which one of the following most कौन सा है? Central and state government in India do not have enough resources. कहाँ बात कर रहे हैं? Open defecation most important public health problem है. Yes. Open defecation reduce the human capital of. ठीक है. Open defecation public health problem in all developing all का कैसे बता सकते हैं? 135 का जो right answer है, that is C. And देख लेते हैं बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक, चलो मोस्ट के हिसाब से नहीं. We generally talk about democracy, but when it comes to any particular thing, we refer to belong to our caste or community की बात करने लगते हैं. So long as this kind of temptation, our democracy will remain a phenomenon. Only kind of democracy हो गई है. You must be in a position to respect a man as a man to extend opportunity for development to those who deserve them and not to those who happen to belong to our community or race. This fact of favoritism has been responsible for much discontent and ill in our country. Statement कौन सा बताओगे? Our country has a lot of diversity, has many caste community. ऐसा हो सकता है. Yes. True democracy would establish by providing equal opportunity. So far, none of any actually understood the meaning of democracy. क्या नहीं समझे हैं? It will never be possible for us establishing truly democracy governance. के कभी भी possible नहीं. The most appropriate is true democracy is providing equal opportunity. Next. ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कट गया पेज क्योंकि मैंने उस चक्कर में स्टोर किया था. ये अच्छे से होता है. I think today's second last questions. The existence establishment of formal financial system. The institution है that offer safe, reliable and alternative financial instrument is fundamental in mobilizing saving. To save, individual need access to safe and reliable financial institution such as bank, appropriate financial instrument, reasonable financial incentive. Such access not always available है to all peoples in developing countries. सभी के पास नहीं है. Like India, more so rural areas. Saving help poor household को save करता है to manage a volatility in cash flow, smoothen consumption and build working capital. एक encourage करता है immediate spending temptation. वो consider the following. Indians of financial institution do not offer any financial instrument to rural household to mobilize their income. Poor household tend to spend their earning saving due to lack of appropriate financial instrument. 137. The right answer taken by UPSC is ओनली बी को लिया है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई यहाँ पे बात नहीं. क्रूशियल मैसेज क्या है? एस्टैब्लिश मोर बैंक डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ promote financial inclusion. Yes, financial inclusion पे ही बात की. And last one is government may take steps which would otherwise be infringement of the fundamental right of individual, such as acquiring a personal land against his will, refusing permission for putting up building, but larger public interest for which these are done authorized by the people. Parliament discretionary power to the administration can be done away with it. It is becoming more and more difficult to keep this power within limits, as the government has many number of tasks उनको करने के लिए, where discretion has to be used. There must be rule and safeguard to prevent misuse of power. नहीं होना चाहिए आपको power का misuse. System have to be devised which minimize करे if not prevent abuse of discretionary power. Government must work conducted within the framework of recognized rules के हिसाब से काम करना चाहिए and should be similar and predictable. The most logical assumption. Government should always be given a wide, always
डिस्क्रिशन देना चाहिए, इन ऑल मैटर क्रेडिट, सुप्रीमेसी ऑफ रूल एंड सेफगार्ड शुड प्रिवेल करना चाहिए अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पॉसिबल, कहाँ पे बात करें, नन ऑफ देम, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बी फॉर दिस वन। दैट्स इट, एंड प्लीज कल से जो है आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करें, कल वाले के बाद 2016 से लेकर 2022 एंड 17 से तो एटलीस्ट सारे के सारे देखें, वहां पे 2-3 बार इनका रिविजन करें, क्योंकि वहां से थीम जो चली आ रही है वो अभी तक भी फॉलो की जा रही है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।